Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory and we were discussing factor rings. In the previous lecture we have seen the definition of factor rings और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आइडियल का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है फैक्टर रिंग्स को डिस्कस करने के लिए. इसके साथ ही हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ फैक्टरिंग और यहाँ पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग और कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, so let us start this discussion by the example number 10 and it is very interesting. Example 10 और इसमें हमने कहा है दैट लेट आर इज इक्वल्स टू A1, A2, A3, A4, okay, where all the AIs are coming from Z. Okay, so we are taking the all 2 by 2 matrices where the entries are coming from the set of integers. Okay, and let I be the subset of R consisting of matrices with even entries. Okay, then first of all we are looking to show that I is an ideal of R and the other one is discuss the factoring R by I. ओके, तो सबसे पहले हम इस I को आइडियल प्रूफ करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से R बाई I हमें दिखेगी. ओके, सो और दूसरा ये भी कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये भी हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस राइट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडियल प्रूफ करना है. सो गिवन दैट R is equals to the 2 by 2 matrices A1, A2, A3 and A4 where all the AIs are coming from the set of integers and I is can we write I is in the form of matrices? What we can write, this is equals to set of like 2 B1, 2 B2, 2 B3 and 2 B4. Okay, where all the BIs are coming from Z. ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी कोई भी इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक इवन इंटीजर बनेगा. सो हियर वी कैन से दैट दिस I कंसिस्टिंग ऑफ दोज मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर इवन इंटीजर्स. ओके, अब हम प्रूफ करेंगे कि I एक आइडियल है. ठीक है, नाउ we are saying that I is ideal. Okay, so first is I is an ideal of R. And how can we prove that? We will choose any two element and then we'll apply the ideal test. Okay, so we will show this using the ideal test. Okay, and for this let A that is equals to, let me write 2b1, 2b2, 2b3, 2b4
and B is equals to 2C1, 2C2, 2C3 and 2C4. Okay, are any elements in I where हमें पता है कि अगर हम इस तरीके से इसकी एंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं ए और बी की, तो यहाँ पर B1, B2, B3 और C1, C2, C3, C4 ये सभी इंटीजर से ही होने चाहिए. वेयर यू कैन सी B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 and C4 all are integers. Okay, now just apply the ideal test. So now what about the a minus b, and that you can simply say is 2, let me write b1 minus c1, 2 b2 minus c2 and 2 b3 minus c3 and 2 b4 minus c4. And obviously अगर b1 b2 b4 b c1 c2 c3 c4 ये सभी इंटीजर्स हैं तो इनके डिफरेंसेस भी इंटीजर्स ही होंगे, और उस केस में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सभी एंट्रीज इवन बन जाएगी, और उस केस में वी आर श्योर दैट दिस इज एन एलिमेंट ऑफ आई. ओके, एज यू कैन सी as b1 minus b2, b1 minus c1, comma b2 minus c2, comma b3 minus c3 and that b4 minus c4 all are element of z. ठीक है, so this is the first one. Now the second one you can see. Now we are taking any element from the parent ring. So let some c that is equals to a1, a2, a3 and a4 belongs to R, where a1, a2, a3 and a4 these all are in this set of integers. Okay, then what about their product? So if I say a1, that is I am writing the ca, that is equals to a1, a2, a3, a4 and then multiply this matrix by 2 b1, 2 b2, 2 b3 and 2 b4. Okay, so it will be equals to, if you see when we multiply it by, then we will have a1 b1 and a2 b3 and then we have 2 like here. So I can write 2 times a1 b1 plus a2 b3. Okay, then we can have, here you can see we have 2 times a1 b2 then 2 times a2 b4, right? So I can write here a1 b2, here I'm writing this one. Okay, a1 b2 plus a2 b4. Okay, and similarly we can write 2 times a3 b1 and a4 b3. So I can say this will be equals to a3 b1 plus ba4 b3, and then we can have 2 times a3 b2 plus a4 b4. Okay, but the interesting part is जितने भी a1 a2 a3 a4 और b1 b2 b3 b4 ये जितने भी एलिमेंट है सभी इंटीजर्स है, तो जब हम इनका प्रोडक्ट कर कर एडिशन करेंगे तब भी ये एक इंटीजर ही रहेगा. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 इसका मतलब इसकी हर एक एंट्री अब इवन नंबर है, राइट? सो वी कैन से which shows that CA is an element of I, and similarly
Similarly, AC, if you multiply on with the reversal order, then again we will have 2 times something, okay, in each entry. Again AC is an element of I. Okay, तो यहाँ से हम क्या conclude कर सकते हैं? Thus I is an ideal of R, and the moment we have an ideal of R, then we can talk about the factoring. Okay, so now we can discuss the factoring R by I. Okay, so now let me write the element of R by I. So we are going to discuss that discussion of R by I. So how can we do that? When we write R by I, then this is simply take the any element of this ring R. So we are writing A1, A2, A3, A4, and then add into the I, right? Where we can say that A1, A2, A3, A4, this element is coming from the ring R, and obviously these A1, A2, A3, A4 are integers. Okay, अब हम ये देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये किस तरीके का दिखेगा. ओके, सो टू सी दिस कि इसके अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, उसको देखने के लिए लेट अस टेक सम स्पेसिफिक एग्जांपल. ओके, सो वी आर हैविंग दैट what type of elements are in R by I. Okay, so let us identify this. So for this we are going to choose any element from the ring R. So we can say क्योंकि I में तो सारे वो ही matrices हैं जिनके लिए जिनके एंट्रीज इवन एंट्रीज है. Okay, so if you choose any element from the R, so let me write this. This is equals to like 3, 4. Then we are taking 7 and 9. Okay, so this is any arbitrary element from the ring R. Okay, then this 3 can be written as 3, 4, 7 and 9. That will be equals to, you can write this as 2 plus 1. Then we can write, let me write it as 1 plus 2. Okay, so that we can write it on the right hand side. 1 plus 2, then we can have 0 plus 4. We can write this as 1 plus 6 and then 1 plus 8. Okay, now you can see this is the addition as term by term. So we can write this as 1, 0, 1, 1 plus the matrix 2, 4, 6, 8. Now look at this matrix. क्या इस मैट्रिक्स की हर एंट्री इवन नहीं है? और जब जब इवन मैट्रिक्स होगी उस केस में दैट मैट्रिक्स विल बी एन एलिमेंट ऑफ द आइडियल आई. और जब कभी भी हमें पता है कि कोई आइडियल का एलिमेंट हम ए ले लेते हैं, देन ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए ओनली. ओके, जब एलिमेंट खुद ही इस आइडियल ए का मेंबर हो जाता है, चाहे आइडियल हो या सब रिंग हो, जब हम इसमें ऐड करते हैं तो वापस हमें वही पर्टिकुलर सेट मिल जाएगा. ओके, अब हमें पता है कि 2, 4, 6, 8 की हर एक एंट्री इवन है, और इवन है तो ये आइडियल आई का एलिमेंट है. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? हियर यू कैन सी 2, 4, 6, 8 is an element of I. So 2, 4, 6, 8, that plus I is same as I.
Okay, so thus you can see, thus if we write 3, 4, 7, 9 plus I, that is same as 1, 1, 1, 0 plus I. Okay, now look at this particular metric. जब हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी हर एक एंट्री या तो ज़ीरो है या फिर वन है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई भी एंट्री इस तरीके से है जहाँ पर वी आर लाइक हैविंग सपोज इस मैट्रिक्स ए बी सी डी, इस तरह की कोई भी मैट्रिक है आर की, तो इसमें क्या है, अगर कोई ए इवन है तो उस केस में हम क्या लिख देंगे, ए कैन बी रिटन एज 0 प्लस ए। और अगर ए ओड है तो उस केस में हम इसे लिख देंगे 1 प्लस ए माइनस 1। ओके, तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे हमेशा। अब जैसे ही ए अगर ओड है तो ए माइनस 1 हमेशा एक इवन नंबर बनेगा, जैसे हमने यहाँ लिखा था अभी, वी हैव रिटन दिस 1 प्लस दिस 3 माइनस 1। ओके, 1 प्लस 7 माइनस 1, तो ये जो भी नंबर बनेगा वो एक इवन नंबर बनेगा। इसका मतलब हम हमेशा या तो हर एक एलिमेंट को 0 प्लस ए में लिख सकते हैं या फिर 1 प्लस ए माइनस 1 में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एलिमेंट बनेंगे ए और ए माइनस 1, ये इवन नंबर होंगे। तो जब हम इस आर के कोई भी मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री को इवन नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। और वहाँ पर जो रिमेनिंग एंट्री होगी वो या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, क्योंकि दो इवन नंबर के बीच में जब हम इवन नंबर की बात करेंगे तो ओड नंबर कोई भी इंटीजर है तो इसमें इवन और ऑड नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो हम उसमें ज़ीरो ऐड करें, ज़ीरो ऐड करने पर वो इवन नंबर है, या फिर उसमें प्लस माइनस 1 करने से वो इवन नंबर बन जाएगा। दो ही तरीके के नंबर होंगे। ओके, अगर किसी इंटीजर में प्लस माइनस 1 करने पर वो इवन नंबर बन रहा है, इसका मतलब जो जिस एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ओड एलिमेंट रहा होगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि 0 और 1 की हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई द होल स्ट्रक्चर ऑफ एनी एलिमेंट प्लस आई। Okay, so we are just rewriting this set. Okay, so we can say based on this discussion, we have that r by I can be written as some element, suppose r1, r2, r3, r4 plus I, where these ri's are element of this set 0 and 1। ठीक है, तो या तो r1, r2, r3, r4 इन सभी में इनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ठीक है, अब हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इस पर्टिकुलर सेट की साइज क्या है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the size of r by I, that is number of elements in r by I, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब r by I में यू कैन सी जब हम किसी भी इस तरीके के एलिमेंट की बात करेंगे तो जब जब ये एलिमेंट डिफरेंट मिलेंगे हमें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ r by I मिलेंगे। तो हमें ये देखना है कि r by r1, r2, r3, r4 जब r i's 0 और 1 हो सकते हैं तो उस केस में ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो वी कैन सी दैट वी कैन identify the elements of
R by I by identifying the elements R1, R2, R3, R4 where Ri's are coming from the set 0, 1. ओके, अब हमें ये पता है कि R1 के पास 2 चॉइस है, R2 के पास भी 2 चॉइस है, R3 के पास भी 2 चॉइस और R4 के पास भी 2 चॉइस है. सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस? ओके, सो एज we can see each entry of R1, R2, R3 and R4 has 2 choices. Okay, so there are a total of how many? एक entry की 2 choice, then again 2 choice and 2 choice and 2 choice, that is 2 to the power 4 and that is equals to 16 choices for the element R1, R2, R3 and R4. Okay, where Ri's are coming from the set 0, 1. तो इसका मतलब इस तरीके के हमें 16 एलिमेंट मिलेंगे और जैसे ही हम 16 एलिमेंट की बात करेंगे तो उनमें प्लस आई करने से हमें R बाई आई के 16 एलिमेंट्स मिल जाएंगे और ये 16 एलिमेंट्स आपको किस तरीके के दिखेंगे? Let me write that one also. So if I say this will be looks like this one. Okay, here you can see ये सभी वो एंट्रीज हैं जो हमें मिलेंगी. ओके, तो जब आप सारे R1, R2, R3, R4 को 0, 0 पुट करेंगे तो ये एक मैट्रिक मिलेगी. इसमें R4 1 है, यहाँ पर R3 1 है और इस तरीके से हमें ये सारी 16 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिल जाएगी जहाँ पर हर एक एंट्री कुड बी 0 और 1. ओके, सो there are 16 elements in R by I, which are as follows. So how we can write this? So again, let me write that particular table. So we have these entries and when you add I into this, then that will be the set R by I. So I'm writing if you add plus I, then this is one element. Then plus I, this is second element. Plus I, third element. Plus I, fourth element. Plus I, fifth element. Okay. Plus I, plus I, प्लस आई प्लस आई. ये आइडियल को हम ऐड करते ही ये आर बाई आई के एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, प्लस आई एंड प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई and plus I. So this is the R set R by I. Okay, so this is how this looks like.